Hi Mahima, how are you? Hi, I'm good. आप बताओ. I'm super excited to have you here. बहुत simple reason क्योंकि because I love LinkedIn, right? And I know you have been very active on LinkedIn, now on Twitter also. तो बहुत चीज़ें आज सीखेंगे आपसे how to grow LinkedIn, how to growth hack LinkedIn, how to not just grow LinkedIn for yourself, but for so many of people that you are working with, helping them grow their LinkedIn, build a personal brand, how to do that, how to achieve that, and in such a shorter time period of time. तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे एंड नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लिंक्डइन आई वांटेड टू नो यू हैव बीन इन द फर्स्ट बैच ऑफ लिंक्डइन एक्सेलरेटर प्रोग्राम राइट how was that journey, how did you ended up in LinkedIn Accelerator program, what aspects, how it helped you grow your business? So I remember last year, February, LinkedIn announced about LCAP, which is LinkedIn Accelerator program. And I wanted to badly be a part of it. For some reason, I was like, मुझे बस जाना है इसमें. So number one, I wrote on a paper कि please God select me for LCAP. I actually did that, and मैंने वो paper एक book के बीच में रख दिया था, and basically I manifested for it. Right. Then of course there was a huge form that LinkedIn had sent us, and we had to shoot a video, write long answers, like literally they mentioned it should be a 500 words, 200 words. So we did all of it. There were a lot of applicants, I think over 1,000 people or maybe 3,000, I don't remember the exact count, applied for it. So I was very unsure if they would even consider my application or not. But because I actually wanted it, I manifested it, and I actually worked hard on the entire process. Yeah. Probably they could, find me caliber enough for Right. the program, and that's how Right. I got in it. But how has it helped you? Like after going into LinkedIn Accelerator program, what changed? What did you learn over there so that people can get to know what exactly do you get out of it? So, before the program, I was trying to crack LinkedIn personal branding. I was doing it actually, but I had no direct access with the LinkedIn team. Right. So, the number one benefit of that program was direct access to their team. Right. We used to get weekly emails on what is going to trend in the coming week, Okay. what tools are they going to launch, what features they are going to launch. So I remember a lot of features that the audience got to know later on. We already knew in advance, and we had the beta version of it. Right. So that was the number one advantage, and we still are in touch with the LinkedIn team. Right. So that gives us an edge, that gives us an advantage of, getting to know what's going to come on the platform in advance. Secondly, the uh, platform, like the LinkedIn team, was super supportive. They gave us so many insights about the platform, such great mentorship sessions, and access to, even like we even got some $2,000 around to Yeah. get That's free money. Yeah. yeah, not free money. I Yeah. mean, I at Well least deserved money. invested that money Yeah. in my content creation. So I Sure. got a ring light and all Correct. the mic and all that jazz, which I before thought if I should invest in or not. But Right. thanks to LinkedIn, they gave us the grant, and we Right. invested in the right tools and resources. So that made us up our content creation game. Then we had, strict rules to complete certain set of assignments and Oh. projects कि इतने post आपको करने ही हैं, इतने formats करने ही हैं. Right. So we had, I think, minimum 4 or 5 formats that we had to do in that course duration. So I started my newsletter on LinkedIn because of it. Right. I did a video post because of the assignment they Correct. gave us. So that made us step out of a comfort zone and Right. learn so much, which otherwise I would have never tried. So overall, I got to know what content works for me on LinkedIn. Thanks to them, they pushed us to create video, newsletter, everything. Right. So मुझे समझ आया, okay, text post with images work the best for me. Videos don't do that great. इस तरह से वो चीज़ का अंदाज़ा लगा. Then the grant that they offered made me invest in my content creation journey. Third, of course, access to the LinkedIn team. Correct. So overall, for someone like me who offers personal branding as a service, it was a great experience. So, how many followers did you had when you joined LinkedIn Accelerator program and उसके बाद क्या growth हुई उसके अंदर? So honestly speaking, I don't remember how many followers I had back then, but मुझे अच्छे से याद है मेरे 8400 followers बढ़ गए थे within 2 months after. 8400 followers. Yes.
and after that the too on program. LinkedIn is massive growth. Absolutely, absolutely. इंस्टा बोलते, ट्विटर बोलते, ट्विटर चलो छोड़ो, हाँ, इंस्टाग्राम बोलते तो आई वुड हैव स्टिल लाइक कि ठीक है 8400 in 2 months is still fine, exactly. but LinkedIn is crazy, right? Yeah, Absolutely, that program, because they pushed us that you have to yeah, post 4 times a week, you correct, have to post in different formats. right. So we had no other choice because otherwise हमें grants के लिए हम eligible नहीं Eligible थे. नहीं होते, yeah. So सबको वो एक motivation था कि करना ही है मतलब by Correct, hook or crook. So correct. we got massive growth. Everyone in the And did it program. help you in business also, like Of getting course, more of course, clients? of course. We, How? I used it in my pitch every time that I'm a part of LCAP. I'm part of LCAP, founding batch Correct. of LCAP. So it gave my clients also confidence that, okay, she Yeah. understands the platform better. Now the question is, you have your own company by the name of Sorted Brands, right? Which is again a personal branding, online reputation. It's an agency that helps Yes. other creators or other businesses or people like me who want to, Founders, entrepreneurs. create content and get to it, right? एक तो हो गया कि आपकी since your agency also deals with work which is related to LinkedIn. Had you had a product driven business which is very different from it, right? Do you think it would have still helped you in the same way it has helped you now because your work is also again on LinkedIn? I'm not really sure because I knew since day one that my forte is content and social media. Yeah, Now, of course, I could have created a product, maybe a course or right. ebook, because a lot of people in my industry are Yeah, doing it. yeah, But honestly, I want to do it the day I will be sure that I am offering something totally different, valuable. unique, Yeah, and valuable. correct. I can create an ebook today. I can hire a team or probably just write anything, get a Yeah, PDF on Canva, and just sell it for 500 rupees. exactly, Yeah, and make some decent money and be happy about right. it. But I And don't post want on to. Twitter and Exactly. Instagram about it. Yeah, And write in my bio, Yeah. author or Yeah. whatever. But I don't want to do that. I'm Yeah. really waiting for the right time. yeah, So for now, I am sure and I'm happy that okay, service line is working well for me, agency Yeah. model is working well for me. Hmm. Product, first I would like to try and then see how it works for me before, answering this. Right. So your company is Sorted Brands, right? Yes. What is Sorted Brands? How did you figure out this name? This is very Oh very God. unique name. How did you ended up doing Sorted Brands? Some people find the name very cringe, but I don't care. Huh. I like it, and the Yeah. backstory is very something which people don't know at all. Yeah. So I have two Instagram accounts. One is my public account, which is Mahima Jalan, brand builder something, and then I have a private account, which is since my school days. And उस time पे I had this username is sorted. कॉलेज स्कूल टाइम पे एंड एवरीवन यूज्ड टू बी लाइक यार तेरा यूजर नेम बड़ा यूनिक है बहुत अच्छा Sorted है बंदी है basically. हाँ Yeah. तो उस बिकॉज आई रिमेम्बर देयर वाज अ क्रिएटर ऋषभ समथिंग जिसका यूजर नेम था मिस्टर सॉर्टेड अभी भी Okay. शायद होगा Okay. एंड उससे इंस्पायर होकर मैंने मिस सॉर्टेड कर लिया था एंड मुझे बिल्कुल वो मिल Did भी you had गया a था crush on him? नो नो Okay. कहीं देख ले गलती से तभी मैंने पूछा है तो नहीं इसी के बहाने if you want to convey it to them, that's नहीं fine. नहीं Yeah. So Okay. अभी तो मेरे को पता भी नहीं है where is he, what is he up to. Okay. But back then I used to follow him. तो Yeah. मुझे instantly मिल भी गया वही spelling मिस sorted का. Yeah. And मैंने वो कभी change नहीं किया कि यार the moment I change, what if someone else takes it. Yeah. Right. तो वो मिस सॉर्टेड मेरे को लोग बुलाने भी लग गए. इनफैक्ट मेरे पास एक दो पार्सल्स आते थे तो वो मिस सॉर्टेड के नाम से Oh, crazy. ऐसे आने लोग भेजने लग गए थे. सो माय फ्रेंड्स यूज्ड टू कॉल मी मिस सॉर्टेड. So when I thought of starting my agency and naming it, I Yeah. wanted something firstly which resonates with my personality because I'm very Yeah. self-obsessed. If I'm a content creator and Right. personal branding offer कर रही हूँ तो of course Correct. there is that self-obsession. Yeah. So I wanted the name to be very much relatable to my vibe, my personality, and also it should speak about the company's vision. So sorted, basically we sort life of our clients. Yeah. They don't have the time to build their brands on social Right. media post, and they Right. don't have, some of them don't have the understanding of social media. So we sort their life and provide them end-to-end personal branding and Right. PR solutions. So Right. that's the story behind the name. You talked about self obsession. Oh God. तो बहुत सारे पर्सनल ब्रांड्स लाइक कोई भी बंदा जिसको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग या पर्सनल ब्रांड क्रिएट करना है, डू यू थिंक सेल्फ ऑब्सेस्ड होना जरूरी है? यार सेल्फ ऑब्सेस्ड तो नहीं बट सेल्फ लव बहुत जरूरी है. Because now everyone, every platform is pushing video content, Yeah. image content.
So if you're not very comfortable putting yourself out there, and forget about image or video content, but storytelling works the best, Yeah, be it any platform, be it Instagram, Twitter, or LinkedIn. correct. So if you're not comfortable talking about yourself and you are very much like, यार मैं business के अलावा कुछ बात नहीं करने वाला, and Yeah. business भी मतलब मेरा नाम मत लो, बस काम Yeah, company yeah. कैसे build हो रही है. So I think that's not something I vouch for and I appreciate. So you have to love yourself enough to talk about yourself. But how do you draw the line of being cringe and being self-love? There is always a line, right? Yes. बहुत सारे लोग just on the name of self-love, they put out content which is cringe, right? Because they know that that will get them attention and so much of likes and engagement, especially on platforms like Instagram. Absolutely. And now we have seen that happening on LinkedIn also, right? So how do you draw that line? Or do you think it is fair to draw a line or just focus on the engagement? Yeah, cringe is very subjective. Huh. What might be cringe for you might not be cringe for me, Right. first of all. Right. Secondly, I, of course, have drawn a line, but on the basis of my definition on cringe, people still find me, like there are people, for example, people who are not into content creation and they are just consumers, my college, mates or my teachers, and Yeah. a lot of people who follow me who are not creating but just consuming content. Right. So whenever they see me on stories talking or doing any random thing, posting my selfie, a lot of them, find it cringe. Correct. So, but for me, it's not cringe. So that is one thing. It's a very subjective topic. Now, as far as the engagement is concerned, I think आपके कुछ values होने चाहिए, आपके कुछ rules होने चाहिए कि यार मैं ये कभी नहीं करूँगी for the sake of engagement. उसके अलावा यार, if you want to grow on the platform, any platform, you have to be friends with the algorithm. So if that asks you to put your selfie, put a video of yours, put a random anything, मतलब आपके बारे में आपको करना पड़ेगा, मतलब या तो आप slow growth के साथ comfortable हो जाओ, या आप कोई ऐसा हैक पकड़ लो which works crazy for you कि आपको cringe भी ना होना पड़े and आप grow भी कर जाओ, which is not a very easy thing to do, या फिर आपको मतलब करना ही पड़ेगा. तो आई एम कंफर्टेबल विद इट बिकॉज मुझे अपना पर्सनल ब्रांड भी ग्रो करना है. माई पर्सनल ब्रांड इज माई पोर्टफोलियो. Right. So I don't really mind putting my pictures or videos as far as it is not bothering me internally or my family or people who are close to me. वो एक line draw हुई भी है, but वैसे cringe की definition I think is very subjective. You talked about hacks. Hacks पे आते हैं. So you are active doing content on LinkedIn as well as Twitter, right? Yes. Let's talk about LinkedIn and then we'll go to Twitter. What do you think are the top 2 hacks if I want to start my content creation journey on LinkedIn today? Which are the top 2 hacks I perhaps can focus on that will help me grow very fast on LinkedIn, then on Twitter? Okay, so I think there is no such thing as hack because free ज्ञान is so much available out Yeah. now कि कुछ hack जैसा बचा नहीं है, secret. But one thing that works really well on LinkedIn is a crazy, insane, attractive hook line. Okay. नीचे पोस्ट लोग चैट जीपीटी से पेस्ट कर देते हैं या कुछ बहुत ही बेसिक डाल देते हैं, बट द हुक लाइन इज लाइक सुपर कैची. इनफैक्ट समटाइम्स पीपल क्रॉस देयर line. Yeah. I don't want to name a creator, but what she did recently was that she wrote the hook line, I got pregnant before getting married. Oh. And नीचे पूरा कुछ तो ज्ञान था and last में PS I'm sure. I am sorry I'm kidding. And picture अपनी थी किसी और के बेबी शावर में. Oh fuck. So that post got viral, of course. अब आप hook line में लोगोगे I got pregnant before marriage. Right. So of course that post will get viral. Of course. And she got trolled for it. A lot sure. of creators in fact spoke about it. Right. But उसको But that's engagement all मिल she गई. wanted, right? I'm sure Exactly. that anyways she hoped for. Exactly. Yeah. तो वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा clickbaity हो जाता है, and that's unfair because when the audience reads the entire content and they see that they have been fooled, it doesn't leave a good impression. But हाँ, hook line attractive as in you can always talk about numbers. Right. I made XX money, I closed X clients, I took my first flight. ऐसे करके अगर आप इस टाइप की चीज़ें hook line में डालो तो that firstly works really well on LinkedIn. But does this change the whole narrative of the story or the post? Like just the hook line?
Of course, I mean your hook line is so important on LinkedIn कि आपका पोस्ट क्या है एक्चुअली बहुत बार बाद में डिसाइड होता है. आपका हुक लाइन आप पहले सोचते हो कि यार एक हुक लाइन सोचते हैं, उसके बेसिस पे पोस्ट तो बना ही लेंगे. अच्छा. That happens a lot of times. Okay. So of course it changes the narrative, but we are at this point now on this platform that hooks have become more important than the Then the content of the exactly. post. Yeah. I mean, And what let's about be Twitter? honest. I'm not saying that quality content is not Yeah. important. या Yeah. कुछ भी नीचे लिख लो, बस hook line अच्छी लिख लो. Right. Being a creator, someone selling personal branding, content is very very important for me. Yeah. And I make sure that I don't write something which is very vague or Right. unrelatable or very foolish. But at the end of the day, hook line makes a lot of difference. Right. What about Twitter? Any growth hack to grow Twitter? So if you actually check my Twitter, it's Yeah. like my personal diary. Right. मेरा mood, मेरे thoughts, सब कुछ आपको मिलेंगे उस पे. And it's a very different personality from what I show on Instagram and LinkedIn. Was that your conscious choice? Yeah, that was my conscious choice because I never wanted to grow on Twitter. I never had that thought of building my personal brand on Twitter because nobody in my industry was doing it. So I thought कि ये तो platform है ही नहीं मतलब to grow and build a personal brand. But because I was so candid and relatable that it actually worked for me. And मैंने उस चीज़ को leverage करते हुए I started talking about brand building and agency life Right. and all my challenges, and I could see so many people relating to my journey. Right. That it worked for me. So it was definitely a conscious choice because on Twitter I had no creator friends or my friends from school, college or my family. Right. So it felt like a very safe space कि यार कुछ भी लिख दो, कोई पढ़ने वाला नहीं है, जानने वाला. दो चार कोई दिख भी जाता था, I used to block them. Right. So it was a very safe space for me when I started creating content there with no expectation of getting followers on. या मतलब ऐसा कोई thought नहीं था कि I'll put myself on a pedestal that oh I'm an agency owner or a creator. No, I was just chilling with people, spaces maybe used to talk for hours and have fun and just be real and candid. But that actually worked for me. And on Twitter, people are looking for authenticity and relatable content. So that's the number one hack to grow on Twitter, that be as candid as possible because people are bored of seeing your professional Right. side on Insta and LinkedIn. So Right. Twitter को आप थोड़ा सा different twist दो and be more candid and real there. Talking about client acquisition, हमें you are an agency owner, right? LinkedIn भी platform है, Twitter भी platform है. You put out content on both the platforms. Yes. ज़्यादा बिजनेस एज ए एजेंसी ओनर कौन से प्लेटफॉर्म से आपको दिखा है आते हुए, और इज दैट बिकॉज यू आर एक्टिवली मोस्टली इन दैट प्लेटफॉर्म, इज दैट द रीजन वाई ROI की अगर मैं बात करूँ दोनों प्लेटफॉर्म में से किससे सबसे सारा क्लाइंट एक्वायर हुए हैं आपके? Of course, LinkedIn, because I started early on LinkedIn. Yeah. Then I had that edge of LinkedIn program and multiple other collabs that I did. But what I realized was that on Twitter, I got access to people who never probably opened their LinkedIn, or who I never thought would even reply to me. Because as I mentioned, Twitter is a very candid platform. People are treating Brutal. it like Yeah. their diary. Right. So it's not just me who thinks like that, but a lot of entrepreneurs and founders and basically people who are my target audience thinks the same. Right. So I actually got access to some great people who were not replying to me on LinkedIn or who were probably not even active on LinkedIn. I got really high paying clients from Twitter who in comparison to LinkedIn I feel कि मतलब LinkedIn पे there are so many basically people offering personal branding as a service कि competition बहुत है. मतलब when you get on a call with the client they are like यार हम 4 जगह और बात कर रहे हैं. Correct. तो इस हिसाब से quotation देना. Correct. Whereas on Twitter अभी तो फिर भी थोड़े बहुत creators आ गए हैं Right. offering personal branding, but Right. when I started it wasn't that popular. Correct. So people did not had a lot of options. मतलब there are very few people who are very active on both the platforms, especially CEOs and founders. And it's not easy to do that. Yeah. Exactly. अब LinkedIn पे क्या है, you have to create a proper post and Right. everything. And on Twitter it's very bite-sized content. तो Right. founders वगैरह ना बड़े active होते हैं CEOs Correct. because Correct. quick to consume content. Just Very one line लिख दी and thought जो आया मन में डाल And दिया. आप जिनको follow कर रहे हैं आपको उनका content दिखेगा. मतलब बहुत सारे intellectual pages हैं Twitter Correct. पे, news के pages हैं. तो
content quality is much better on Twitter. Right. Hence, these people are very active here. Correct. तो Because they consume more. एग्जैक्टली सो मतलब वहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था लॉट ऑफ पीपल वर नॉट ऑफरिंग दिस एज अ सर्विस तो व्हेन आई रीच्ड आउट टू देम इट्स नॉट दैट दे हैड अ लॉट ऑफ पीपल टू स्पीक टू अबाउट इट एंड कंपेयर तो हाई क्वालिटी क्लाइंट्स एंड बेटर एक्सेस मुझे ट्विटर से मिला है बट नंबर ऑफ क्लाइंट्स का रेशियो बिजनेस वाइज मतलब वैसे ओवरऑल देखा जाए तो लिंक्डइन से है बिकॉज वहाँ पे बेटर पोजिशनिंग है स्टार्ट पहले से कर रखा है दैट्स व्हाई राइट यू टॉक्ड अबाउट कंपटीशन राइट कि आप लिंक्डइन पे जाते हो तो बोलते हैं लोग कि ऑलरेडी 5 लोगों ने पिच किया हुआ है राइट being an agency owner, how difficult it is for you to, first of all, who is your ideal customer? Okay. And then we'll talk about how do you reach out to them? How do you make sure that you cross that barrier? जो आपने बताया competition वाला, how do you create some unique proposition that you don't even fall in the trap of competing with others? So my ideal clientele basically are founders, entrepreneurs, CXOs, CEOs, CTOs और coaches. Coaches को हम थोड़ा सा कम डील करते हैं. We majorly deal with all the founders and CXOs who want to build their thought leadership and build their personal brand, get their PR done. Now, when I talk about competition, so number one, as I mentioned, my profile is my number one portfolio. And if you actually go through my profile, I don't know if people find it unique or not, but I try to remain as authentic and real as possible. I've always been open about my failures, my goof ups, my mistakes, everything. So that is like my unique proposition to them कि आपको भी ऐसी position करा जाएगा. We will not share any fabricated or artificial or robotic content. But आपको storytelling basically हम leverage करके position करेंगे. And that actually sells. But still competition तो है ही. It's competitive. आप कुछ भी मतलब कर लो. There is always going to be competition and it's difficult to of course get a client, acquire a client जब competition होता है. But there's a room for everyone. And इनको रीच आउट कैसे करते हो? I DM आपने them. बताया कि these are my customers, ideal customers. How do you reach out to them? So I'll be very honest. मैंने sales team hire करी हुई है. मैंने agency जो lead gen offer करते हैं I've hired them. I have kept a full time person also. Okay. I've tried that. I've tried everything. But मेरे को हर बार hire करके regret हुआ है because probably I hired the wrong people. It's not that people don't hire a sales team. In fact, it's very important. And I was talking to one of the founders of a very famous agency, and he told me day one पे हमने एक marketing, sales और HR के बंदे को बिठाया था सबसे पहले. अच्छा. So it's important, but at the same time they also said यार बहुत time लगता है to find the right sales team. मुझे अभी तक नहीं मिल पाई है. So every time right passionate sales team. Exactly. And जो आपके so मेरी प्रोफाइल से अगर रीच आउट हो रहा है तो इट शुड रेजोनेट विद माय पर्सनालिटी एंड आप एक बस कॉपी पेस्ट करके स्क्रिप्ट नहीं भेज सकते हो वो जो एकदम आर्टिफिशियल स्क्रिप्ट होती है and 99% of them have done the same thing. Right. Initially they customize and do all of it. Later on they just send one single step to anybody random who are not even relevant for my services. So मैं बहुत ही unabashedly DM कर देती हूँ. अच्छा. If it's an international client, I try to be very poised and very to the point. I've figured out after multiple experiments that they want to be very to the point and no room for any nonsense. But if it's an Indian client, I try to be a little relatable. Okay. For example, if I see somebody from Noida, hey, we are in the same city, let's catch up. And कुछ फिर ऐसे करके relationship build करा थोड़ा सा. फिर उसके बाद I be very I become very candid if I'm using a product. For example, Lahori Zeera is a client. Yeah. So I texted him कि यार I love your product and Lahori Zeera has been a rage now. Oh right? my God, don't tell me about. Don't get me started. Right. The product is on fire and we are one of the. मैं तो उन्हें यही बोलती हूँ यार आपका आधा business मुझे लगता है मेरे ही घर से आ रहा होगा. So I told him yeah, the product is really amazing. Yeah. My family loves it, and then I pitched myself. You reached out, yeah. Skippi is a client. Right. तो Skippi को हाँ. Yeah.
तो स्किपी को मैंने सो आई रिमेम्बर आई ऑर्डर्ड स्किपी वंस स्विगी से अच्छा and I was out and my mom tried it and she tried it for the first time and she messaged me कि बहुत अच्छा है स्किपी जो तुमने ऑर्डर करा है and I took that screenshot and sent it to Ravi okay कि see my mom sent it and then I pitched him. So I try to be very candid and non-salesy. That has been my approach and it has, you know, most of the times worked for me. So you just DM the founders Yes. of all these brands that you believe in. Yes. Is that really necessary to believe in the product when you're marketing it? Not from the business point of view, no, because after a point अगर आपको actually में scale करना है तो you Yeah. can't really believe in every product, Hmm. but it should not be something आप जिस पे बिल्कुल ही believe नहीं करते हो या Or you hate it. exactly Yeah, hate it, yeah, हाँ. yeah. मतलब if you are If you don't love it, it's still fine, but you should not hate exactly it. if Yeah. you're an anti-smoker for Yeah, example, then probably it's a little difficult to promote a smoking brand का founder, cigarette brand का founder. Yeah. तो उतना कॉन्ट्रडिक्टरी करने के टाइम पे शायद डिफिकल्टी हो बट बिलीव करना हर प्रोडक्ट पे समटाइम्स बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. But there are a lot of celebrities who push and promote a product that they themselves don't consume. How fair is that? I think as far as it's bringing them money and as far as the product is good, I don't find any problem in it because celebrities make a lot of money and they have a very lavish lifestyle. For Yeah. example, if you know Hrithik Roshan का brand है HRX, which is a very affordable gym wear brand. Probably Hrithik Roshan एक luxury brand के उसमें gymming करता हो. Right. या Kareena Kapoor is the brand ambassador of Lakme, but I don't think she ever wears Lakme का वो makeup. Yeah. She might be, you know, using luxury brands, luxury makeup brands. Right. But if the product is good, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज अगर आप देख रहे हो यार करीना ने लगाया है स्क्रीन पे इट बिल्ड्स दैट ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें बिकॉज अब आप सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स ही प्रमोट करते रह जाओगे अगर आप एक्चुअली में सेलिब्रिटीज स्टार्ट अगर उन्होंने उन्हीं ब्रांड्स को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया विच दे यूज. सो इफ द प्रोडक्ट इज गुड कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ मतलब ये गुटखा ब्रांड्स वगैरह वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि फॉर मनी दे आर जस्ट प्रमोटिंग गुटखा एंड सिगरेट्स एंड व्हाट नॉट, सो दैट इज नॉट. वही लोग कर रहे हैं जो बोलते थे पहले कि हम कभी नहीं करेंगे. Exactly. So that's very ironical, but I don't know, they must be getting crazy money. Correct. You know, yeah. So you talked about Lahori Zeera, बहुत सारे other brands I'm sure you have worked with. Any crazy experience or a brand that you thought कि यार ये तो कभी नहीं चल सकता या ये मार्केट कैसे करेंगे, एंड देन यू फिगर्ड आउट अ वे व्हिच वर्कड रियली वेल फॉर दैट ब्रांड और परहैप्स द फाउंडर? कोई ऐसी स्टोरी है या एनी फर्स्ट सेल्स एक्सपीरियंस विद दैट ब्रांड दैट हाउ यू पिच्ड आउट एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन बट इट हैपेंड? आई थिंक ऐसी तो बहुत सारी हैं कि आई पिच्ड आउट टू पीपल विद जीरो एक्सपेक्टेशन एंड दे केम बैक टू मी. फॉर एग्जांपल इवन इन केस ऑफ स्किपी, आई टेक्स्टेड हिम एंड आई पिच्ड माई सेल्फ एंड ही जस्ट रिप्लाइड थैंक यू. Okay. उसके बाद इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया था रवि ने. He reached out to me after 8-9 months. Hey Mahima, I'm looking for branding. Let's connect. And within like one call of 30 minutes, you know, he got converted and we are working together since then. So वो एक hope छोड़ दी थी कि मतलब ठीक है I did my job. अब he's not interested because he was not very active on LinkedIn. वो post नहीं करते थे. तो I just lost the hope. बट ही रीच्ड आउट टू मी 8-9 months बाद जब उनको माइंड में आया कि नहीं यार अब करना है, तो ही रीच्ड आउट टू मी एंड दैट्स हाउ यू नो ही बिकेम माई क्लाइंट. वैसे ही आई वॉज you know, I remember when Ashneer announced his co-founder. Not actually Ashneer announced his co-founder. His co-founder announced that he's the co-founder now a of part Ashneer. of Ashneer's third company. Yes, third unicorn. So when I saw the post, I don't know मेरी feed पे कैसे आया because I was not following him or connected with him. He's a Chandigarh based entrepreneur, so there was no mutual link. I don't know मेरी feed पे कैसे आई. It had some 150 likes. And I was wondering यार इतनी बड़ी news है. He has put a picture with Ashneer. How come this post is just not 150? viral? Exactly. Correct. But because he was so inactive on LinkedIn and this was probably his first post and इन्होंने से फर्स्ट लाइन एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि हुक लाइंस आर इम्पोर्टेंट, उन्होंने बहुत ही सिंपल सा कुछ लिखा था जिसको पढ़ते ही समझ ही ना आए कि ही इज द को फाउंडर.
it did not get that traction. Yeah. And I just opened his profile, stalked him left, right, and center, and I saw कि okay, there's no IIM degree. Sorry, no offense, but कोई IIM degree नहीं है, Yeah. कोई funding नहीं उठा रखी है, या कोई famous They were कोई bootstrapping links. it earlier for a very Exactly. long time. Yeah. या सो कुछ ऐसा कीवर्ड दिख नहीं रहा, मतलब Right. कि IIM या फंडिंग या कुछ भी वैसा, तो मतलब कैसे बना Right. को फाउंडर, एंड देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम ऑन द इंटरनेट. सो मैंने फटाफट उस पर पोस्ट बना के डाल दिया, दिस गाय विदाउट एन IIM degree is now co-founder of Fishneer, and that post got viral. Okay. It got 10,000 likes. 10,000 likes. Exactly, and with More than the original exactly people who was and basically. people got to know about his post through my post. They went to his profile और उस पे फिर 1,000 2-3,000 जो भी likes हो गए थे. Crazy. Followers उनके कोई 1,500 something थे when I saw him for the very first time. Right. And from that post itself, he crossed some 7-8,000 Oh. followers, like from my post. Your post, yeah. Yeah. So that's the proof of work right there. Exactly. And काम it बिना was किए दिखा दिया तुमने crazy. उनको. And I texted him. Yeah. मतलब LinkedIn पे messaged him because Yeah. उस time पे he did not had a reach and followers. So I knew कि even if he doesn't reply, at least he will read it. Yes. तो मैंने बहुत ही candid सा एक text लिखा था इन्हें. हाँ. And he, you know, replied कि अच्छा post लिखा है. हाँ. Thank you. हाँ. तो मैंने पूछा उनसे कि how did you crack Ashneer? Right. Because I'm trying to crack his co-founder. Yeah. So basically co-founder मतलब उन्हीं की तरफ जा रहा था. Correct. So उनका आया कि share your number, Yeah. I want to get PR, this that, and that's how But he got you converted. played it very smartly, right? बहुत लोगों का मैंने ये चीज़ देखी है, like especially in sales, especially when you're hustling, आप ना बहुत जल्दी गिव अप कर देते हो, और एक तो ये रहता है impatient बहुत हो जाते हो. आपने एक मैसेज भेजा, एफर्ट नहीं मारे, एंड यू वर एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि यार क्लाइंट कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, राइट? But what you did is, without expectation, without any hopes of getting him as your client, you created a post. That was the proof of work without even working for him. You Yeah. gave them a proof of work. जिसकी वजह से वो engagement, वो एक relationship, एक context आ गया that helped you crack that client. वो बहुत अच्छी चीज़ थी, which people don't do that. They are like यार क्यों काम करूँ मैं, पहले मेरे को पैसे तो दिए नहीं उसने. You know, they don't do that. They don't do the hard work. स्पेशली इन हायरिंग मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कि लोग मेल सब्जेक्ट लाइन नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, बस रिज्यूमे अटैच कर देते हैं, सर मैम नाम भी नहीं कुछ लिखते नहीं. हैं. हाँ. सो दिस इज अटैच, जॉब नहीं पता किस बारे में है, क्या जॉब है, दे डोंट नो एनीथिंग, एंड देन दे blame you for not replying. Exactly. So you have to put efforts in order to get back something in return. So I think that was very good thing. I think that was the reason why you were able to crack Ankur Warikoo also. When you interviewed him, when you just had 1,200 followers on Twitter, how was that story? ये कैसे Instagram हुआ? actually. Instagram, sorry, yeah. So I don't know how come you know about that interview Yeah. thing, because it's a very very old incident. Lockdown के time की बात है शायद. And I just created my Instagram page थोड़े टाइम पहले ही. Yeah. I had some 1,000 followers, वो भी भीख मांग मांग के कि please follow me. Okay. वैसे कर करके I just collected 1,000 followers and I was posting extremely shitty content. मतलब कुछ भी ज्ञान, मोटिवेशन, कोई कंटेंट पिलर, नीश कुछ नहीं था. पर्सनल ब्रांडिंग दूर दूर तक नहीं थी That is पिक्चर में. before sorted brands? Yes, absolutely, Okay. absolutely. Okay. I was putting very random stuff, and I positioned myself as a content writer. I remember I was, listed in top 100 content writers of India by a website. So I used to, play on that and flex that title in my bio. So Ankur Warikoo rightly said, if you don't ask, the answer is no. Right. And मेरे को था कि यार, तो उस टाइम पे ना लाइव सेशंस बहुत हो रहे थे because people were at home. Yeah. They were free. So बहुत लाइव सेशंस हो रहे थे, ऐसे कोलैब्स हो रहे थे. रील भी नहीं आई थी, रील का फीचर ही नहीं आया था तब. So I thought, okay, let me ask him for it. And he was at 18,000 followers back then. Okay. So I just texted, मतलब messaged him on Instagram that, hey, I would like to interview you. Are you comfortable? Are you free? And he actually replied, and he gave his number, and he said ki you send me the questions and I'll record the answers for you.
Okay. And he actually did that. He Amazing. matlab, took out, and back then he had no team, nothing. He was Right. doing all by himself, and he Right. was very active on all the platforms. But Correct. imagine, I was at just 1200 followers Right. and he was already at 18,000. मतलब मैं अभी भी 18,000 पे नहीं आ पाई Instagram पे. And he was actually growing at a good pace. Right. But he agreed to it. Yeah. Probably he liked my authentic and very candid approach. Again, I was not pushy or salesy Yeah. because कुछ बेच नहीं रही थी, कोई Correct. पैसों वाला एजेंडा नहीं था. Correct. एंड दिस इज वन ऑफ माई बिगेस्ट रियलाइजेशन कि आप अगर डे वन से फर्स्ट पिच से ही सामने वाले को इस मोटिव से, इस थॉट से पिच करो कि यार बस पैसे चाहिए, मतलब बेचना है कुछ, तो इट विल नेवर गेट कन्वर्टेड अनलेस द अदर पर्सन इज ऑल्सो एक्सट्रीमली डेस्परेट फॉर योर सर्विस. Right. अगर आप बहुत ही स्मूथ पिच करते हो विदाउट एक्चुअली साउंडिंग सेल्सy, then it works. So probably that candid approach worked for me, and he actually shot the answers and I posted on Instagram. In fact, अभी मैं last week ही उनका एक session attend करी थी. I'm a part of How to LinkedIn Yeah. by him, and it's Yeah. a free They LinkedIn start, course. what is How to LinkedIn? If for the Yeah. audience, if anyone wants to know, yeah. So it's a free How to LinkedIn program by Ankur Warikoo, but it's not as simple as the name sounds, How to LinkedIn. No, they are not teaching the basic stuff. The course is like super detailed. The modules are like super comprehensive. Ki why are you creating? Now, if I ask you why are you creating content, probably you will give me some answer, but he made us think कि नहीं, मतलब जो आपको लग रहा है वो नहीं है. सोचो बैठ के, ये reasons होने चाहिए. If you think you are creating content for X reason, then probably you are not in the right direction. So it is a very comprehensive program. We Okay. meet every week. We are 30 people, I think, and we meet every week Wednesday, and we also Offline, have in person. no Okay. online. We have guest sessions. We had Web of Sinti last week. So उसमें मतलब Q&A चल रहा था end में. And I told him this incident, Yeah. and he was also laughing. उन्होंने से उनको याद आया कि अच्छा हाँ ये हुआ था एक बारी. Right. तो बहुत ही candidly, बिना किसी selfish motive के, I just reached out to him and it happened. I think बहुत लोग ना ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लोगों को रीच आउट करना. Absolutely. So I was telling you the story offline, right? Yes. कि I reached out to over 15 CEOs in the last few days over WhatsApp. Almost 8 of them have already replied to me, and they are the most active ones who to reply first. Like Ankur Yes. Warikoo, you said, right? Probably have so much of work, content creation अलग चीज़ है, distribution पे अलग काम है, courses हो गए, इतना कुछ है करने को, right? But you'll find them super active on emails and WhatsApp and all these platforms, even after being so busy with the content creation and everything. So it's just a matter of you finding the right method, first of all, कि कैसे reach out करना है, कहाँ reach out करना है, कब reach out करना है when they are most active, and कितना बोलना है. वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. When you reach out, you send a very bulky message. Absolutely. इतना बड़ा spam कुछ, I think what I believe is एक लाइन लिखो and just let that be a hook line also. हाँ. Like for example LinkedIn post की बात कर रहे थे तुम, right? Hook line बहुत important है. If you could write that in the same way in a WhatsApp message or a DM, I believe you will still have the curiosity कि हाँ चल बता क्या करना है भाई, आगे बात करते हैं. So that's an amazing way. People just shy away from reaching out to people. Yeah. तो सेम चीज आपने ट्विटर पे एक बार की थी, which is you earned almost $9,000 on Twitter in just 300 days. वो $9,000 कैसे कमाए? मोनेटाइजेशन तो अभी स्टार्ट हुए ट्विटर पे, पहले कैसे पैसे कमाते थे लोग ट्विटर पे? So one was of course collabs, influencer marketing, because there were very few creators who were actively creating content. Yeah. We used to get a lot of paid marketing campaigns. So usse I made decent money. That Okay. was number one. Then number two was that of course I got a lot of leads, inbound leads, because of my content. So you can say 30% was through influencer marketing and collabs and paid tweets, and remaining ones from my inbound leads. Clients. Yeah. Okay.
अभी मोस्टली व्हाट्स योर एक्विजिशन चैनल? जितने क्लाइंट्स आते हैं ज़्यादातर वो इनबाउंड होते हैं या आउटबाउंड होते हैं? व्हाट्स योर परसेंटेज राइट नाउ? So I think in my case, inbound would be always lesser, because after a point, unless you are not getting viral every day, it slows down the inbound Yeah. वो मतलब as a freelancer it's good कि okay, even if you are converting 2-3 clients every month, it's fine. But once you run an agency model, 2-3 clients से इतना कुछ नहीं होता, मतलब you have bills to pay and you have to scale. Right. तो inbound उतना, and then a lot of time inbound leads are not that high paying. So even if I'm getting 20 leads say per week or through one viral post or whatever, Yeah. a lot of them will not be willing to pay a good amount of money. And I am very, very particular now that I don't want to work with very low paying clients unless they offer something massive in return, say a brand Right. value portfolio में, वो भी I'm very selective now. Hmm. So I do outbound reach, and it's a boutique agency सी, तो हम लोग बहुत bullish नहीं है कि हमें हर महीने 50 clients करने ही हैं on board. Right. Because when I started this, I started as a freelancer almost 3 to 4 years back. एंड तब मैंने सोचा नहीं था कि यार एजेंसी बनाऊंगी, पता भी नहीं था कि नेक्स्ट स्टेप एजेंसी होता है. तो इवन आई एम लर्निंग प्रोसेसेस, आई एम लर्निंग how to sustain good quality of work while scaling, how to build a team, how Yeah. to build a senior team. पहले freelancers और interns hire करे थे, फिर full time hire करे, अब full time को manage करने के लिए भी हम managers Manager hire रखते कर रहे हैं. हैं. Yeah. So I am learning in that process, and मेरे को इतना bullish नहीं होना है sales में that I end up compromising on the quality of my services. तो इसलिए आई एम टेकिंग इट ईजी, आई एम टेकिंग हाई क्वालिटी क्लाइंट्स हु आर पेइंग मी वेल बट lesser in number, so that I can also manage, maintain quality and pay well to my team at the same time. Hence I do outreach, but as per my comfort and convenience, as per my availability कि मैं कितना टाइम दे सकती हूँ process के अंदर, I outreach according to that. But because as I mentioned my approach is very candid, also after outreaching इतना ज़्यादा एक understanding हो गई है कि okay, this client, whether this client is relevant for me or not, whether Right. they have money in the pockets, whether Right. the service is of any use to them, because at the end of the day I don't want to sell it to anyone जिसके लिए बिल्कुल relevant नहीं है ये, या जिसको नहीं लेनी चाहिए सर्विस. तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है अब. तो आउटबाउंड मैं काफ़ी स्ट्रेटेजिकली करती हूँ. सेल्स नेविगेटर, इफ एनीवन इज वाचिंग, एनीवन इन दिस एजेंसी और फ्रीलांसिंग स्पेस इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, या मतलब सेल्स नेविगेटर इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स यू कैन डू. Those who are starting out might find investing 7,000 a month a little on the higher end, but आप बहुत easily उससे ROI निकाल सकते हो if you Right. actually leverage it. Right. So आउटबाउंड का रेशियो डेफिनेटली ज़्यादा है अब, बट ऑल्सो आई हैव रियलाइज दैट इन द लास्ट 1.5 year हमारे वर्ड ऑफ माउथ एंड रेफरल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, बिकॉज फॉर अस क्वालिटी इज लाइक सुपर इम्पॉर्टेंट, एंड आई पर्सनली गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू एवरी क्लाइंट. यू आस्क मी अबाउट एनी क्लाइंट और मुझे पता होगा कि उसका क्या करंट चल रहा है. स्टेटस क्या है. सो हमारे को वर्ड ऑफ माउथ एंड रेफरल्स भी काफ़ी मिलते हैं. बट यहीं पे एक प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक अभी लेट्स से यू हैव 50 क्लाइंट्स टू वर्क विद, राइट? बट व्हेन यू रीच 200 500 आप सबका तो पता नहीं कर सकते, राइट? एंड बीइंग इन दिस सर्विस इंडस्ट्री यू हैव टू consistently create quality content for these clients so that they are retained, right? Retention is always very very important when you're doing a business. Absolutely. तो how do you ensure that the team members, जो आपके टीम में लोग हैं, वो जो काम कर रहे हैं, सेम सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सेम सेट ऑफ प्रोसेसेस फॉलो करें while retaining the creativity angle also intact? क्योंकि क्रिएटिव होना तो बहुत ज़रूरी है कंटेंट क्रिएशन के टाइम पर, राइट? क्रिएटिविटी तो वर्ड में ही है उसके, राइट? क्रिएटिव होते होते प्रोसेस को भी फॉलो करना है. वो स्ट्रगल, वो बैलेंस कैसे करते हो आप? So firstly we don't hire a lot of interns कि बिल्कुल ही हैंड होल्ड करना पड़े, बिल्कुल ही कुछ ना आता हो. कॉलेज स्टूडेंट्स, वी डोंट हायर देम.
we hire people with at least 6 to 8 months of experience कि basics पता हो. हम्म Secondly, it's not easy to maintain quality. I mean, it's easier said than done, but it is very difficult to hire a good talent and retain them. Even if I train them, even if I make sure that they are creating good quality content for my clients, retaining them is very hard. Because आपके issues खाली ये नहीं है कि आप अच्छा मतलब if you are a team member, the only expectation is to not create good quality content for my clients, but also delivering it on time, communicating properly with my clients, with me, and following the company process, being disciplined, honest. 10 चीज़ें होती हैं. करेक्ट आप हर जगह आजकल पढ़ते हो कि यार डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, राइट सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. सो फॉर राइट मी ऑनेस्टी, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें भी टीम में बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करती हैं. So it's very challenging, and I'm not gonna say I am the best at, uh, hiring and then retaining the top-notch talent, because at the end of the day, we are a growing agency and we just can't put in all our money in the talent. मतलब करेक्ट it's not again easy कि आप 1 लाख रुपए सैलरी देकर नहीं बिठा सकते हो या राइटर और को. सिर्फ पैसे से नहीं होता ये या Exactly. यू मतलब कांट if बाय क्रिएटिविटी आई हाँ, बिलीव true, I have या done that mistake of या going over budget and ending up hiring wrong राइट people. So एक वो balance मतलब maintain करना of hiring good talent at your budget is not that easy, and then sustaining like retaining them in the agency. बहुत ही कम मुझे तो ऐसा लगता है इनकी वो होती है, that duration. सो वो सीख रहे हैं. मतलब आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे वो कल्चर आपको ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा कंपनी में कि लोग स्टे करें, उनका मन करे काम पे आने का. तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड फॉर नाउ आई वुड से इट्स वेरी डिफिकल्ट. मतलब आई एम नॉट गोना लाई कि यार मतलब हमने कर लिया है और हम ऐसे करते वैसे करते हैं, मैं 10 ज्ञान दे दूँ. नो, व्हेन यू एक्चुअली डू इट इन रियल, इट्स वेरी टफ. या लिंक्डइन के ऊपर ना थोड़ा सा और बात करते हैं बिकॉज आई एम श्योर पीपल वुड लव टू हियर दिस. मुझे लेट्स से मैं बिगिनर हूँ, लिंक्डइन पे मैं आया और मुझे लिंक्डइन पे कंटेंट क्रिएट करना है. आई वांट टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड. ग्रोथ हैक्स तो बाद की स्टेज हो गई, बट अभी मुझे स्टार्ट करनी है अपनी जर्नी. तो कितनी पोस्ट मुझे डालनी चाहिए लिंक्डइन पे? यू हैव वर्कड विद सो मेनी क्रिएटर्स, यू हेल्पिंग देम, यू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम बेटर. कितनी पोस्ट डालनी चाहिए, कब डालनी चाहिए, क्या कोई टाइम होता है? मंडे का कोई अलग टाइम होता है, ट्यूसडे अलग टाइम होता है? किस टाइप की पोस्ट डालनी चाहिए? इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फीज होनी चाहिए उसमें, नहीं होनी चाहिए? हाउ डू यू फाइंड कंटेंट? वो कंटेंट क्रिएशन का जो एक तरीका होता है सबसे कि ये मुझे कंटेंट लिखना चाहिए, वो कैसे करना चाहिए किसी को शुरू? So if you are an extreme beginner, you should post at least. हम दोनों की बात करते हैं. पहले हम बात करते हैं कि बिल्कुल ही बिगिनर है, आज हाँ. तक किसी ने कंटेंट बनाया नहीं है लिंक्डइन पे, अब उनको स्टार्ट करना है, तो पहले उनकी बात करते हैं. फिर हम बात करेंगे उनकी जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत लिखते हैं एंड दे वांट टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. So if you are starting out, you should post 5 times a week, and you should experiment as much as possible with content style, format, hooks, everything. Use videos, use text, use images, use selfies, use polls, carousels, बट everything. लिखना क्या है वो कहाँ से ढूंढा जाए, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि यार क्या लिखूं, किस बारे में लिखूं. तो हाउ डू यू फाइंड कि कंटेंट क्या लिखना चाहिए? यार मतलब आई एम बिग ऑन स्टोरी टेलिंग, तो आप अपनी जर्नी शेयर करो. नाउ सम पीपल डोंट हैव अ सॉफ्ट स्टोरी और अ मैसिव Which सक्सेस works स्टोरी. really well these days on LinkedIn. एग्जैक्टली. Yeah. या ऐसे कोई बहुत मैसिव सक्सेस स्टोरी नहीं होती Yeah. है. It's fine. I mean, you can Yeah. just share what's happening in your life, which you think can add value to other people's life. I mean, even if you are, say, a full-time business development employee in an XYZ organization and you are trying to build your personal brand, just try to see कि आपने अपने full-time job में क्या सीखा है ऐसा जो आप आगे शेयर कर सकते हो. It needs not to be a वेरी फैंसी वो कि मैंने इतने पैसे बनाए या मैंने अपनी फुल टाइम जॉब क्विट करके कंटेंट या क्रिएशन शुरू कॉलेज करा. ड्रॉप आउट कर दिया मैंने. एग्जैक्टली. मतलब सबकी वैसी स्टोरीज नहीं होती है. सम पीपल हैव अ वेरी सिंपल लाइफ दैट दे स्टडी, गेट अ जॉब एंड दे आर हैप्पी विद इट, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके पास कंटेंट आइडियाज नहीं है. सो यू हैव टू
थिंक एवरीथिंग फ्रॉम द कंटेंट पर्सपेक्टिव नंबर 1. स्टोरी टेलिंग के अलावा सी अब आप अगर हफ्ते में 5 बार पोस्ट करो तो आप 5 दिन अपनी स्टोरीज नहीं डाल सकते हो. मतलब स्टोरीज आर लाइक योर ट्रम्प कार्ड्स, तो आप उनको एक ही बार में से यूज़ नहीं कर सकते. तो यू हैव टू पोस्ट समथिंग इन्फॉर्मेटिव. तो आपकी जो भी नीश है, वेदर यू आर इनटू सेल्स मार्केटिंग, वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, शेयर योर लर्निंग्स एंड शेयर लाइक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट. Then third, you can talk about what's happening around. For example, if you are in India and आप देख रहे हो अभी जैसे G20 होने वाला है या फिर चंद्रयान 3 exactly. Post about it. I mean, one of our clients posted about it. The post got viral and it got great traction. So in and around आपके क्या हो रहा है उसके बारे में आप पोस्ट करो, आपकी कंट्री में क्या हो रहा है. You talk about it. और टाइमिंग्स मैटर करते हैं. Timings, of course. I mean, if you are again in Indian home and आप रात के 3 बजे पोस्ट कर रहे हो, correct, and आपकी टारगेट ऑडियंस भी इंडिया है, तो it doesn't make sense. So और ऐसा भी फर्क पड़ता है क्या 4 बजे 6 बजे में भी बहुत फर्क देखने को नहीं, बिकॉज आप कितना भी, पहली बात तो आई थिंक आप कितना ही स्टिक करोगे एक टाइम. इफ आई टेल यू कि यार नितिन 9 बजे रोज सुबह पोस्ट कर दिया कर, ये बेस्ट टाइम है. 9:10 भी नहीं होनी चाहिए, 9 बजे हो जाना चाहिए पोस्ट. तो आप 1 महीने कर लोगे, 2 महीने कर लोगे, बट कभी तो लेट होगे, कभी तो कुछ तो मतलब सिचुएशन ही कि यू कैन ऑलवेज शेड्यूल. बट स्टिल आई मीन व्हाई टू बी सो बुलिश कि नहीं इतने ही बजे करना है. इतने में फर्क नहीं पड़ता, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है. बट फॉर एग्जांपल ऑन लिंक्डइन ideally you should post before 11 a.m. in the morning because उस टाइम पे सब लिंक्डइन पे एक्टिव ज़्यादा होते हैं. फिर उसके बाद you can post around 5 p.m. in the evening. That again works well. But if you're posting say at 10 p.m. कि लोग जगे हुए तो है ही ना, इस थॉट से अगर आप करोगे 10 बजे कौन सोता है, तो आई डोंट थिंक दैट्स द बेस्ट टाइम टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन. एंड द पोस्ट विल आल्सो डाई डाउन. एग्जैक्टली, बिकॉज आपका प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है एट द एंड ऑफ द डे लिंक्डइन. तो अनलेस यू आर समवन लाइक मी हु इज यू नो सेलिंग पर्सनल ब्रांडिंग एंड जिसके लिए इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन की बिजनेस भी वहीं से आ रहा है एंड कंटेंट क्रिएशन भी वहीं पे हो रही है, तब आप शायद रात के 10 बजे चलाओ. बट एज अ फाउंडर या फुल टाइम एम्प्लॉय जरूरी नहीं है आप 10 बजे लिंक्डइन चला रहे होगे. वो तो आपके ऑफिस लैपटॉप में वैसे भी खुला होगा. करेक्ट. आप उस टाइम पे इंस्टाग्राम शायद चला रहे होगे, फेसबुक चला रहे होगे, स्नैपचैट चला रहे होगे. तो टाइमिंग्स डू मैटर टू सम एक्सटेंट. बिल्कुल ऑफ टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, बट वी हैव सीन पोस्ट वर्क एट डिफरेंट टाइम्स. मतलब हमने इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग सब में देखा हुआ है कि चलती है पोस्ट, ऐसा नहीं है. इफ स्पेशली द स्टोरी इज वेरी कंपेलिंग. बट हाँ, आई मतलब यूजुअली मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग अराउंड 5 बजे के बाद वर्क्स वेल. जितने भी क्रिएटर्स हैं लिंक्डइन पे बहुत अच्छे अच्छे वायरल होते हैं, हम देखते हैं इतने सारे. डू दे क्रिएट कंटेंट देमसेल्फ और देयर आर पीपल लाइक यू who are behind the scenes and working for them? I'm sure you would have, being in this space, you understand कि यार बहुत लोग हैं जो बस सामने कुछ और दिखता है और पीछे कुछ और है और लिखता कोई और है उनके लिए कंटेंट. क्या ऐसा मोस्टली ऐसा होता है? बिकॉज आई एम श्योर ये सब क्रिएटर्स तो बहुत बिजी होते होंगे अपने बाकी कामों में. So I think creators who are active on Instagram or YouTube more than LinkedIn, and now they have started coming on LinkedIn and exploring it as a platform, especially a YouTube. Like for example, कोई Instagram lifestyle influencer है, right, जो 100K 500K followers पर Instagram पे grow कर रहा है, collabs हैं, but now he also wants to build his presence on LinkedIn. Professional brand. Yes. Yeah. Might hire a ghost writer. यार ये मेरा इलाका नहीं है, ये आप मैनेज कर लो. But people like me who are offering this as a service or any service से content writing, marketing, जितना मैं जानती हूँ are creating content for themselves, because we might be like super busy in our life, but at the end of the day we understand the platform much better than other people. So हमें वो एक satisfaction ही नहीं मिलेगी किसी और से content लिखवा के. मतलब आप अगर किसी से एक पोस्ट लिखवा भी लो ना, I have a team of writers, full time writers, I can just brief them and ask them to write a post for me. But मैं अगर उसमें आधे घंटे बैठ के चेंज ही करूँ तो इससे अच्छा मैं खुद ही लिख लूंगी. ऑथेंटिसिटी अगर मैं ही डाल रही हूँ, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, इमोशंस एग्जैक्टली, तो मैं ही खुद ही लिख लूंगी. एंड दैट्स द केस विद एवरी क्रिएटर एट लीस्ट हु इज ऑफरिंग लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग एज सर्विस, कि उनका इतना अच्छा होल्ड है प्लेटफॉर्म पे सभी का कि दे राइट एटलीस्ट देयर कंटेंट ऑन देयर ओन. दैट्स व्हाट आई नो एंड आई हैव सीन.
दोनों में से डिफिकल्ट क्या है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर रनिंग अ एजेंसी वर्सेस बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर? I think it's difficult to run an agency as per my experience and opinion. I might be wrong. I might have a different opinion than others, but for me, agency running an agency is not easy. It हाँ just takes all your energy and हाँ. time and patience and everything. बट तुम्हें लगता है कि अगर तुम सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करो, लाइक यू सेड रनिंग एन एजेंसी इज डिफिकल्ट, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन करती, उसी पे पूरा 100% फोकस करो, लेट्स से यू वुड मेक मोर मनी देन बीइंग एन एजेंसी? क्या ऐसा कभी सोचा, ऐसा कभी थॉट आया? यार क्योंकि अब तो क्रिएटर ऐसे नोट छाप रहे हैं एकदम लिटरली. absolutely. So content creation is a massive या industry minting huge money. या But I personally I don't think कि मैं उतना शायद बना पाती because you need to be, मतलब आपको हर चीज़ को कंटेंट बना देना है. आप एक फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, आपको व्लॉग बना देना है यूट्यूब पे. आप फ्रेंड्स के साथ लंच करने जा रहे हो, आपको रिकॉर्ड पहले करना है. आप घर, मतलब कहीं पे भी आप घर पे नाइट सूट में भी बैठे हो तो आपको यही सोचना है यार कंटेंट कैसे बना सकते या हैं. दैट्स नॉट मी, दैट्स नॉट माई वाइब एनी मोर. कि मैं पहले मैं बहुत कोशिश करती थी एंड आई एक्चुअली यूज टू डू दैट. आई यूज टू पुट अ लॉट ऑफ स्टोरीज, आई यूज टू बी सुपर एक्टिव. बट अब मेरे को थोड़ा सा पीस चाहिए कि यार मतलब आई कांट जस्ट पुट एवरीथिंग राइट. as content. Yeah. For example, I don't share a lot about my family life. I don't want to drag them in this content creation thing because they are not extremely comfortable in front of Right. camera and उनकी मैं story डालूं. करेक्ट. So अब मतलब I have come to that phase where I try to live the moments more. If I'm out with my college friends, now they are not into content creation, so I Yeah. don't want to kill the fun by Yeah. just making everything content. क्या चलो एक vlog बनाते हैं, reel Right. बनाते हैं. Right. I can do all of it and get free publicity, but I don't want to do that. तो मेरे लिए ये शायद बेस्ट ऑल्टरनेटिव नहीं होता बिकॉज मैं हर चीज़ को कंटेंट नहीं बना पाती. Those who are making a lot of money are actually then doing it very seriously. कि मतलब हर रोज पोस्ट जा रहा है, हर रोज वीडियोस जा रहे हैं, हर रोज स्टोरीज पे एक्टिव हैं. Correct. 2 घंटे स्टोरी नहीं डालते हैं तो उनका आ जाता है सॉरी गाइज आई हैव बीन MIA, आई हैव बीन फीलिंग लो, आई हैव बीन सिक. या तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ. मतलब आई एम वेरी मूडी इन दैट इसी पे ना सेंस. बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि देयर इज अ डिबेट व्हिच हैपेंस अ लॉट कि यू राइटली सेड कि मैं सब कुछ नहीं डाल सकती, आई कांट शो एवरीथिंग टू द पब्लिक, राइट? डू यू थिंक फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स गेट अ लॉट मोर अटेंशन और लेवरेज बाय जस्ट बीइंग फीमेल वर्सेस अ मेल क्रिएटर? ऐसा कभी कभी फील हुआ है तुम्हें? So if I talk about creators in my industry या मतलब entrepreneurship category में, थोड़ा Yeah. leadership category में या podcast category में, the names I can think of on the top of my mind are all male creators. Raj Mani, Ranveer Alawadia, Yeah. all of them. Yeah. They are male creators. तो अगर मेल होने का कोई डिसएडवांटेज होता तो वो वहां तक पहुंचे नहीं होते अभी तक. या अगर फीमेल होने से ही आप टॉप पे आ जाते या ज़्यादा जल्दी ग्रो करते तो प्रॉब्ली मेरे माइंड में टॉप पे 2 फीमेल क्रिएटर्स का नाम होता, 2 फीमेल What पॉडकास्टर्स का about नाम होता. Instagram and other platforms? सो आई थिंक टू सम एक्सटेंट फीमेल क्रिएटर्स डू गेट an added advantage, but now times are changing and male creators काफ़ी आ गए हैं मार्केट में, growing rapidly at a very fast pace. The problem is not in the fact that अगर आप female creator हो तो ही आप चलते हो. The problem is that a female creator is more comfortable putting herself out there. चाहे अब उसको डांस भी करना पड़ रहा है एक रील में तो वो कर लेगी, और लड़के शर्माएंगे. अब आप फिर शर्माओगे तो फिर आप बैठे रहो, मतलब नहीं ग्रो कर पाओगे. राइट. तो प्रॉब्लम क्रिएटर मतलब जेंडर में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कंफर्ट जोन में है. नाउ आई बीइंग अ फीमेल क्रिएटर आई एम नॉट कंफर्टेबल dancing on a trending audio, Right. and there is nothing wrong in it. Nothing wrong in it. आप कोई एक ट्रेंडिंग ऑडियो पकड़ के वीडियो बनाओ इंस्टा पे, हाई चांसेस है इट विल गेट गुड ट्रैक्शन, बट मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ यार. तो प्रॉब्लम मेरे में है
वैसे ही मेल creators are sometimes super uncomfortable putting their selfie or videos or dancing, being candid. They want to be all poised and sophisticated and whatnot. So that's the reason female creators grow faster, and not because they are female. You put out a lot of tweets. Yeah. Oh God, कुछ don't talk tweets हैं जो about it. मैंने ऐसे figure out किए जो मैं पूछूंगा. One of the thing you said is you want to be at a place where you can afford a Gucci bag, but don't really have to buy it. वो thought क्या है, क्यों है? यार मतलब ये एक बहुत ही recent realization था. When I Yeah. was in college or school, I used to be like, यार, I have to make so much money that I don't have to think about doing this, that, whatever. I mean, Myntra पे if I used to shop during Yeah. my college days, वो filter में price low to high करना, cart में डालते डालते 10 बार Right. सोचना if I Right. should buy it or not. कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन से जाएं या फ्लाइट से जाएं, इतना उस पर थॉट देना. Correct. तो ये सब चीजें करी हैं मतलब. बट अब भी मतलब तो अब यही क्या लगता status था. है? अब ये स्टेटस है कि डिस्पाइट आई कैन डू things which I always wanted to be, doing impulsive shopping or Yeah. traveling by flight, because now I make my own money. I Yeah. realize the value of it. Yeah. I realize the importance of being frugal, of saving money, investing money at better places. तो अब अंदर से वो चुल Which is खत्म हो गई expensive है. hotels. Oh no. Please यार, you can't grill me मतलब ऐसे. No, but that's fine. Like experience is something which is always very Comfort. So हाँ, actually तो मतलब I, expensive hotels की क्या कहानी है वो? yeah, I mean, I'm big on comfort. Yeah. And I never honestly, even when I was not earning, I was हाँ. traveling from my, parents' money, or I was traveling with them. I never really stayed in extremely shady places, because even they always wanted comfort. So even if it wasn't a 5-star, it used to be a 4-star or a comfortable, property. So वो चीज़ एक तो starting से ही रही थोड़ी. Secondly, if I travel, I don't travel a lot, by the way. I'm not a traveler. I see a lot of creators Yeah. who travel a lot. उनका Yeah. therapy होता है and what not. और But I content am मिलता है वहाँ से. हाँ. exactly Yeah. content plus therapy. Yeah. ना मैं content बना पाती हूँ because I'm not the pro at Yeah. ये reels बनाना, इतना हर चीज़ को content की तरह वो लेना. Plus मुझे फिर लगता है यार chill करो, enjoy करो. ठीक है यार, मतलब content तो बनाते रहेंगे. So I don't travel a lot because मेरे को travel करने का उतना शौक नहीं है. I miss my home very easily. मुझे घर का खाना, घर पे रहना वो ज़्यादा पसंद है. So whenever I travel, I look for comfort. अगर आप बहुत if I travel very frequently, I might look for homestays and OYOs or cheaper options. But Yeah. if I'm traveling extremely less, तो फिर मुझे comfort चाहिए. So Right. that's the story, and that's the reason I work very hard कि यार comfort afford कर सके. मतलब luxury is the next वो. Expensive hotels का logic is to not show it on Instagram कि see I'm staying at a 5-star Right. property or something. I don't do that in fact. But the logic behind expensive hotels is actually buying comfort. Yeah. कि मतलब वो वहाँ पे compromise करना पसंद कम है. Comfort के लिए पैसे चाहिए होते हैं. Yes. 4-star, 5-star, Gucci bag, everything obviously needs money. And हम बात करते हैं अभी how do you make money? What scale size of money do you make? What all are the income sources that you make money from? और अगर लोगों को पैसा कमाना है तो वो कैसे कम टाइम में पैसा कमा सकते हैं? बैंक स्टेटमेंट शेयर कर देते हैं. स्क्रीनशॉट लगा देंगे हम जरूर. बिल्कुल. So we are running a 6-figure agency. We are a boutique agency, and we right now offer personal branding and PR as our core services. Although we are in the content space since a while, so I take other content projects as well. But our forte and key services include personal branding and PR. Apart from that, I do very selective collabs. So that is another source of income. But I won't say it's a major source of income because Right. I have become very picky with collabs. उसके अलावा कोई फिलहाल तीसरा सोर्स तो नहीं है कि कोई प्रोडक्ट या हाँ
Another source, which again is a very hidden source, is mentorship and one-on-one coaching, which I give to newbie freelancers or newbie agency owners or students who want to grow their freelancing career. But I don't sell it because it takes a lot of your time, and people might be, I mean, I actually hats off to people who are slaying in all the areas Yeah. and doing all of it. हर But जगह से पैसे कमा हाँ, रहे हैं लोग. I don't know how they do that. मुझे भी समझ नहीं आता. एग्जैक्टली. बट मेरे साथ जब जब मैं ये ट्राई करती हूँ कि Yeah. लेट मी पुश माई कॉन्टेंट, सॉरी, कंसल्टेशन कॉल Yeah. service, let me take more and more brand collabs and then my agency, Yeah. I end up screwing my peace of mind and I Yeah. end up giving up on my personal time, तो कोई which स्टूडेंट है, लेट्स से कोई अभी अभी कॉलेज से निकला है, उसको कोई इनकम, इफ दे आर नॉट वर्किंग, दे वर नॉट फॉर्चुनेट मे बी टू गेट अ जॉब समवेयर, राइट, बट दे वांट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल इनकम सोर्स, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या, कैसे वो स्टार्ट करें विदाउट, यू नो, क्या बोलते हैं वो, पैसे ऐसे कहीं पे उड़ाए ज़्यादा बिना, हाउ टू गेट दैट काइंड ऑफ सस्टेनेबल इनकम, क्या कर सकते हैं लोग? So what I did when I was in college, Yeah. even I wanted an internship or job, and even I did wanted to spend on day one, I just reached out to people. I applied everywhere on job portals. I left no place where I could get a job or internship. मतलब internशाला से लेकर naukri.com से लेकर LinkedIn जॉब पोर्टल पे मैंने हर जगह अप्लाई किया, रोज अप्लाई किया. मेरे फ्रेंड्स भी करते थे, मैं भी करती थी. दे यूज्ड टू बी लाइक, यार कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, हमने 4 जगह अप्लाई किया, कहीं से भी नहीं आया. Yeah. एंड वैसे तो यार इतना तो मैं मतलब 5 मिनट में कर लेती हूँ. कम से कम 20 जगह तो करो रोज. करेक्ट. सो आप हर जगह अप्लाई करो, बिकॉज जब मतलब आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि ये कॉलेज स्टूडेंट्स IIT IIM वाले नहीं है, बट नॉर्मल DU स्टूडेंट्स हैं, BHU स्टूडेंट्स हैं. So you need to apply everywhere, especially places where people are open to hire freshers and interns, and try your luck, because otherwise बैठे बैठे तो नहीं मिलने वाली जॉब. Personal branding, side by side build करो अपना. Start putting content. It's free. You don't have to invest in an iPhone or a mic or a ring light. मतलब मैं आज भी I do have a ring light, but most of the times I shoot reels अपने natural light में. मुझे वो lighting better लगती है. I hardly wear a mic. I use my AirPods. I don't have a iPhone Pro Max something. नॉर्मल आईफोन है, वो पुराना वर्जन ही है. अब लगता है देख के कि यार क्वालिटी बेटर हो सकती है, बट ठीक है, मतलब ले लेंगे, ऐसी कोई वो जल्दी नहीं है. सो आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपने नॉर्मल फ़ोन से रील बनाना शुरू करो, फोटोज लेकर लिंक्डइन पे कंटेंट बनाओ, कुछ भी करो. कुछ भी करने को कंफर्टेबल नहीं हो, ट्विटर पे बनाना शुरू करो कि फोटो वोटो डालने की नीड ना पड़े, एंड टेक्स्ट कंटेंट से बात बन जाए. कोरा एक्सप्लोर करो. वन ऑफ माय फ्रेंड्स is a Quora writer, and when I got to know about her, I was blown कि यार Quora पे clients मिलते हैं Quora के लिए, कि यार बहुत मिलते हैं, बहुत clients हैं Quora के लिए. So आपको figure out करना है कि आप क्या कर सकते हो. You can be a graphic designer, writer, marketer, whatever, but आपको rejection और continuous effort के लिए prepared रहना पड़ेगा. Apply everywhere and just try your luck and build a personal brand simultaneously. Amazing. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 घंटे और निकल जाएंगे बात करते करते. It was so amazing to have a conversation with you. कुछ आपको कहना है स्पेशली वो लोगों के लिए जो सेल्स मार्केटिंग इस टाइप में कुछ करना चाहते हैं, इस फील्ड में ग्रो करना चाहते हैं? Do you have anything to say to them? Firstly, please follow him, speak to him, Thank you. because he is a pro in both the areas. But I just want to say one thing कि यार मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं अब सेल्स और मार्केटिंग में कि इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड इफ़ यू कम फ्रॉम दैट माइंडसेट कि यार इतना कंपटीशन है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, लेट मी फिगर आउट समथिंग एल्स, या लेट मी जस्ट सेटल फॉर लेस, प्लीज़ यू आर थिंकिंग रॉन्ग. बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. टॉक टू पीपल. एज ही मैंशन कि लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आउटरीच, तो वो मत करो. जस्ट रीच आउट टू पीपल, टॉक टू देम. डोंट sell yourself. Learn the art of selling. मतलब whether you are an agency owner, founder, CEO or a marketer, salesperson, sales आपको पूरी लाइफ करनी पड़ेगी. आपको या तो अपने आप को sell करना है. Everything is sales.
बिजनेस सेल कुछ करना sales है, है, yeah. अपने आपको शादी एम्प्लॉयज करनी है तो भी आपको अपने आप को सेल सेल करना करना है, है, यू हैव टू सेल टीम योरसेल्फ. सेट करते टाइम, Yeah, हायर करते टाइम अपनी कंपनी को सेल करना है, एज अ correct, फाउंडर अपने आप को सेल करना है कि right, वाई यू शुड जॉइन अस. right, तो यू हैव टू सेल अपने yeah, आप को पूरे टाइम. सो यू हैव टू मास्टर द आर्ट ऑफ सेलिंग. आप एक बार वो सीख लो तो आपकी आधी प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो जाएगी. फिर right, अटेंशन वगैरह ठीक है, यू लर्न विद टाइम. yeah, But the first step of selling is very important. Learn that, yeah, leverage that. People out there are accessible. Talk to them. correct. And yeah, Okay, thank you for being here, Mimna. So amazing. It was, likewise. I loved the conversation, and hopefully we'll soon have another conversation very Oh, soon. absolutely. I'm waiting for it. Thank you so much for inviting me. It was Thank you lovely for sharing my insights, which I never did before. Yeah, इतना in depth मैंने कभी answer नहीं किया इन questions को. So thank you for asking these Thank you. questions. I hope people find value in it. definitely. Okay. Thank you.